Well, hello everyone, and welcome to EduTap. So, guys, we welcome you to this session, to this series, another session for this series for your preparation for NABARD Grade A. So, guys, this session is going to be for English, and today we'll be practicing live questions on a time-bound manner today here in the session itself. So, guys, kindly give me a confirmation if I'm audible and if I'm visible to everyone. So guys, if you can hear me and if you can see me, just give me a confirmation in the chat box and then we shall begin with the session. Good evening, Mohit. Hello, Saloni. Thank you, dear. Thank you for the confirmation, guys. So, right, perfect. I think everything is working perfectly fine, right? All right. So, without wasting any more time, guys, the exam is approaching and it is approaching really fast. So, we do not have a lot of time. So, today I would like to discuss with you, the questions that I'm going to discuss with you. I'll help you with this, with the ways and strategies to solve such questions in the exam. But let's take the questions today in a time bound manner. So I have named it as a live mock test. So guys, are you ready to take a live mock test with me? You have to keep a track of your score, and at the end of the session I'll ask you how many questions you got right and how many you got wrong, so that you get a reality check, right? That where do we stand today and what are the areas that we need to work upon. So guys, are you ready for a mock test? Are you in for it? What do you say? Yes. All right. Thank you, Mohit. So, guys, before we begin the session, I would like to inform you about our live quick revision batch. So, this is a batch that we have just launched a couple of days ago, and this batch is the last solution, is a one-stop solution, as well as the last solution before your exam. If you feel that you need help, if you feel that you need to cover a few topics, so what are we offering in this course? This course is a live quick revision batch. So all the classes will be live and will be available to you in a recorded manner later on as well. So this is a 3-week preparation plan where there will be 70-hour live classes conducted for you, and the seats are only limited, guys. So I think I'm not sure if there would be any seat left by now, but you can try. And we are offering flat 80% discount on this course. You can use the code NABARD80, capital NABARD80, and the link for this course has been given in the description of the video. So if you want to join us in our courses, please feel free to do so. And guys, before we go any further, the one thing that you need to do is like the session, right? And if you're new here, don't forget to subscribe. So I'm waiting for everyone to like the session, guys. And see, this is the least you can do, guys. We come and we put a lot of efforts for you here, right? So that the least you can do in the reciprocation is just like the video and share it if you want with anyone you feel that he may or she may need it, right? So I think everyone is ready for the live mock test. So guys, we will be taking the questions in a time bound manner. For every question I have allocated 1 minute, right? So we'll try to simulate the actual timing of the exam, right? Let's see how many questions can we get right and how many can we get wrong in the stipulated time, right? So let's try to take it in a time bound manner. So let's begin. Today is today's live mock test 1 for you, and on 26th I will bring another mock test for you on 26th evening, same time, same place, right? And I'll also give you some homework today, so don't just hurry and don't just leave the session as of now. I mean, as soon as you want. There is homework question, there is a lot to be discussed, so just stay connected with me. So let's begin with the session, guys. Let's start, and I'll be giving you questions and you will be solving them right here, right? So this is the first question. Now, guys, please remember, the first thing that you need to understand is, before you begin the exam, always see what is the structure of the exam. What I mean by structure is how many questions, just give it a quick look. How many questions are there in a comprehension? How many questions are there for error detection? How many questions are there for, let's say, double fillers or sentence rearrangement or word replacement or idioms and phrases or sentence improvement, close test? So there are different types of questions. So first of all, always make
make sure that you go through the structure of the paper so that you can plan in your head that, okay, I have roughly around 14 to 15 questions based on comprehension section, and then I have about roughly about 7 to 8 questions based on grammatical part, and then the rest is vocabulary. So then you can plan accordingly that how much do I need to target, right? And which questions will I target first and which questions will I target later on. So guys, this, if you want to ask me, sir, how would you approach the exam, guys, always remember, always start with the shorter questions, smaller questions, one liners, like error detection based questions, like double fillers based questions, like word replacement based questions. So we'll see such questions today, and but we're taking a mock test, but this is a strategy that you need to start working upon if you have not done so already. Always, guys, have you noted this? Reading comprehension is always the first question of the English section. Guys, do you agree with me? Yes, reading comprehension is mostly the first question of the of your English section, right? And why is that? Have you ever thought about it? Have you ever thought about it, that why is reading comprehension always the first section of this paper? Because guys, that is what they want to see. If a student is coming in the exam with a strategy, or is it just trying his luck out here? And that is what this is all about. So see, if you start with the first question itself, reading comprehension, obviously you are going to take a lot of time while solving those questions. And let's say after completing your reading comprehension, you look at your watch and you see 7, 8 or 9 minutes are already gone. You start panicking, and that is what he wants to see. That is what he wants to do. That if he wants to see if a student is well prepared, he has strategy to approach the exam or not. That is what he wants to see. So even if you find reading comprehension at the beginning of the section, don't attempt it. Skip it. Go to the shorter questions first. Attempt them, and then you should attempt in an increasing order of the length of the question. Shorter question, then a little bigger than that, maybe close test, then maybe then at the end you can come to reading comprehension, right? So please make sure that you have the strategy with you. Now let's start with the questions, guys. We'll read the passage and then I'll give you the questions. So I'll give you 1 minute for every question. So another important thing, always read the directions very carefully. Don't just look at the question and assume something that उसने यही पूछा होगा, right? क्योंकि every year there are new type of questions that are given there. Sometimes they give you 3 sentences and they ask you to find the one sentence which has error in it, and sometimes they do it the other way around. They give you 3 sentences and they may ask you that find out which sentence does not have an error in it, right? So please read the directions very carefully, right? So the direction says the following passage given below has words and phrases highlighted as they might need a change. Also, there might be blanks that need to be completed. So read the given paragraph carefully and answer the questions that follow. So उसने कुछ यहाँ पे phrases, कुछ words को bold करके दिया, जैसे integration, enveloped, और ये A and B, and then there is a blank. So we have to see what can we replace here, or what can be put here, right? So let's read the passage together, guys. Is the world at the cusp of another cataclysmic change? The world order, which was sketched by the integration of the Soviet Union, is up for another paradigm shift. If that happens, then the uncertainty will redefine the new international norms for some time. Every change in the world has been followed by a spell of violence and human wickedness that increases the dash of the smaller and weaker states. Before the new norms settle down and solidify, the restlessness of the society and the anxiety of the individual and the anguish of the civilization can always cause greater havoc. The First and the Second World Wars are examples and reflections of the changes that were causing by deep anxieties. But those are tales of a century back when the world was not technologically as advanced, and neither was it so vastly open. Half of the civilization was still under darkness. But today the world is so strongly interconnected thanks to the internet, social media and smartphones that it is creating a new puzzle. At a time when so many choices are available, when the human mind is flooded with information, then why has so much negativity and bitterness enveloped the mind space? Why are the demons of hatred and selfishness ruling the human brain? So he is writing a critical passage here where he is talking about whatever has happened in the past has happened, but it has long impacts on the human psyche of a human brain, and that is the consequence.
sometimes. So the restlessness, cataclysmic change when we see in the society of the world, that is what leads to, you know, incidences like World War One, World War Two. But that was 100 years ago, where people, you know, information was not available. People didn't know if there was a war going on because no information could be transmitted easily. But today everything is on your fingertips. But why are we still, you know, why do we still have so much negativity and bitterness enveloped in the mind space, and why are we still, you know, living um in a bad world, sort of thing, right? So that is what he has said. So we've read the passage. Now we need to answer first 5 questions on the basis of the questions that are given to you. So now I'll give you 1 minute for every question, and you have to answer in the chat box itself, right? So I'll show you the question. Which of the following options would best improve the phrase a in the given question? For the cusp, in, at the cusp, for, on the cusp of, in the cusp, or no replacement. So we have to see what could be the replacement of this phrase. Is the word at the cusp of another cataclysmic change? Yes, guys. So what can be the replacement? For the cusp, in, at the cusp, for, on the cusp of, in the cusp, or no replacement required? Yes, guys. Quickly give me your answers in the chat box so that I'm able to move to the next question. Quickly, guys. 30 seconds left. Yes, you just have to give me the option A, B, C, D, E. What could be the right replacement? And please keep a track of your score so that at the end of the session we may discuss that where did we go wrong and what could have been done better for this. Anuja says B, at the cusp, for. Saloni says A, for the cusp, in. Harshita says C, on the cusp of. Very good. Yes, guys. Guys, please be receptive. ये आपका वो कौन बने करोड़पति नहीं खेल रहे हैं, बट आपको पता चलेगा यार आप कहाँ पे हो, आप अपने आप, मतलब when you are doing it on your own. Very good, Benetul. Very good, Amit. See, guys, the right phrase here is on the cusp of. On the cusp of is basically a phrase which means on the brink of, right? So are we at the brink of a new change? So at the cusp nahi hota, on the cusp hota hai. So guys, you also need to prepare for such phrases. So phrasal verbs and idioms and phrases are important for NABARD exam. Don't forget to cover them up. Okay, so do go through the common phrases that you come across. Very well done, guys. So the correct option was on the cusp of. So is the word on the cusp of another cataclysmic change? Next question, guys. Question number 2. Which of the following options would best replace the word integration as used in the paragraph? Now, your options are unification, demilitarization, upsurge, collapse, or no replacement required. So integration, this is the word. So is the word on the cusp of another cataclysmic change? The world order which was sketched by the dash of the Soviet Union is up for another paradigm shift. The world order which was sketched by the integration of Soviet Union. Yes, guys. Now integration. Now what could be the right replacement? Unification, demilitarization, upsurge, or collapse? Very good, Jishnu. Very good, Vihar. Very good, Anuja. Very good, Mohit. Very good, Saloni. Keep up the good work, guys. But अब अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का पता है, थोड़ा सा भी हिस्ट्री का अगर आपको आइडिया है, तो सोवियत यूनियन का इंटीग्रेशन हुआ था या कोलैप्स हुआ था यूएसएसआर का? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. पूरा पैसेज पढ़ के तो देखो एक बार कि इज द वर्ल्ड ऑन द कस्प ऑफ अनदर कैटेक्लिस्मिक चेंज की बात कर रहा है वो. द वर्ल्ड ऑर्डर विच वाज स्केच्ड बाय द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन is up for another paradigm shift. If that happens, then the uncertainty will redefine the new international norms for some time. So the correct word was collapse. थोड़ा सा कंटेक्चुअली भी सही होना पड़ेगा वहां पे, गाइस. वी कांट जस्ट लुक एट, सी ये सिर्फ इंग्लिश नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक और कॉन्टेक्स्ट भी लगता है, राइट? बट नॉनदलेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाइस. गलतियों से ही हम सीखते हैं, ठीक है? सो कीप इट अप. क्वेश्चन नंबर 3.
Which of the given options will fill the blank in the paragraph appropriately? Okay, so what is the blank? Let's look at the blank. हाँ, ये next line में every change in the world has been followed by a spell of violence and human wickedness that increases the dash of the smaller and weaker states. So if the collapse, whatever the world, if there is another cataclysmic change, if that happens, uncertainty will redefine the new international norms for some time. Every change in the world has been followed by a spell of violence and human wickedness that increases the dash of the smaller and weaker states, that increases the dash of the inclusion of the vulnerabilities, fortunes, quandary, or none of the above. Yes, guys. So any change leads to human wickedness. Vihar, see, there is no sectional time, right? Sorry, I mean not in this not in this session. We're just taking it as a mock test, but in the exam you will be given 25 minutes and there will be 30 questions, right? So you need to plan accordingly that which questions to target here. Very well done, Harshita. Very good, Amit. Very good, Saloni. Very good, Mohit. Very good, Priya. Very good, Anuja. So absolutely correct. The answer is vulnerabilities. So every change in the world has been followed by a spell of violence and human wickedness that increases the inclusion of vulnerabilities of smaller and weaker states. Very well done. Right, let's look at question number 4. Which of the following options replaces the phrase be to make it grammatically correct and meaningful? Okay, let's look at the phrase be. Okay, so this is phrase B. The First and the Second World Wars are examples and reflections of the changes that were causing by deep anxieties. Achha. So we have to find the right replacement which is grammatically correct here. So the First and Second World Wars are examples and reflections of the changes that were causing by deep anxieties, that were causing by or that were caused by deeper anxieties, those causing deep anxieties, towards creating deeper anxieties, or by causing deep anxiety. What do you say, guys? Very good, Anuja. Very good, Harshita. Very good. नहीं प्रिया, दोज कॉजिंग, अब एकदम से सेंटेंस के बीच में हम ऐसे नहीं करते, दोज कॉजिंग डीप एंग्जाइटी. वेरी गुड मोहित. सी द करेक्ट यहाँ पे क्या बनता? The First and the Second World Wars are examples and reflections of the changes that were causing by deep anxiety. No, that were caused by deep anxieties. By those causing deep anxiety, nahi. Towards creating deeper anxieties, nahi. By causing deep anxiety, nahi. The right answer was that were caused by deeper anxieties. So the First and the Second World Wars are examples and reflections of the changes that were caused by. See, this is a passive sentence. By use हो रहा है, right? तो जब हम passive sentence देखते हैं तो हमें समझ आना चाहिए कि helping verb के साथ verb की third form use होती है, right? So यहाँ पे क्या use हो रहा था? Verb की ing form. So examples and reflections of the changes that were causing by deep anxieties or that were caused by. So that were caused by deep anxieties. Very good, Bihar. Very good, Mohit. Very good, Saloni. Keep up the good work, guys. And another question: which of the following word would replace the word enveloped as used in the paragraph? Disregarded, ensued, faded, developed, or no replacement required? Let's read the first. Okay, this is the word enveloped. So at a time when so many choices are available, when the human mind is flooded with information, then why has so much negativity and bitterness enveloped the mind space? Why has so much negativity and bitterness enveloped the mind space? Yes, guys. Disregarded the mind space, ensued the mind space, faded the mind space, developed the mind space, or no replacement required? What do you say, guys? What do you say is the right word? Very good. The only student who has answered it correctly is Harshita. Keep up the good work. See, guys, enveloped was absolutely clear, absolutely correct there. See, what was the sentence said? What did the sentence say? At the time when so many choices are available, when the human mind is flooded with information, then why has so much negativity and bitterness enveloped? मतलब क्यों दिमाग को घेरा हुआ है
इतनी सारी नेगेटिविटी ने, इतने सारे दुर्विचारों ने, राइट? सो व्हाई हैज सो मच नेगेटिविटी एंड बिटरनेस एनवेलप्ड द माइंड स्पेस? व्हाई हैज सो मच नेगेटिविटी डिसरिगार्डेड द माइंड स्पेस एंड यार एलिमिनेट किया? एनस्यू, व्हाट इज एनस्यू? किसी का पीछा करना, एनस्यू परस्यू, राइट? एनस्यूइंग और परस्यूइंग, ठीक है, किसी के पीछे जाना। फेडेड, धुंधला हो जाना। डेवलप्ड, एब्सोल्युटली रॉन्ग। द राइट कंटेक्स्ट इज नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। सो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे गाइस, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रेडी फॉर सच ऑप्शंस। डू नॉट जस्ट एक्सपेक्ट के पेपर इतना इजी आएगा कि आंखों के सामने आंसर चमक रहा होगा आपको, राइट? डोंट डू दैट, डोंट फॉल फॉर दिस। सो अपने आंसर्स, अपने क्वेश्चन आंसर्स करेक्ट एंड इनकरेक्ट मार्क करते चलो। सही है तो 1 लिख लो उसके आगे, नहीं है तो माइनस, मतलब नेगेटिव मार्किंग रख लो। एंड एट द एंड आप सबको मुझे अपना फाइनल स्कोर बताना है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट यार, देखो उसमें कोई जजमेंट नहीं है। सो आपको खुद को पता चलेगा यार आज हम कहाँ पे हैं। इफ वी सिट इन द एग्जाम टुडे, व्हाट वुड वी स्कोर, एंड देन व्हाट आर द एरियाज दैट वी नीड टू फोकस अपॉन, राइट? Chalo. Next type of questions, guys. Let's read the directions. Below, a small sentence has been divided into 5 parts: A, B, C, D, E. Okay. These parts are not in their correct order. These parts are not in their correct order and given as A, B, C, D, E. Also, one blank is given in one of the parts. You are required to fill the given blank and arrange each part in order to form a meaningful sentence. अब देखो ऐसे complicated question आ जाते हैं एग्जाम में। उसने एक सेंटेंस को 5 पार्ट में ब्रेक कर दिया और बोला है कि उनको रीशफल करो, सही अरेंजमेंट लाओ और जो ब्लैंक दिया है उसका भी सही वर्जन ढूंढो। तो अब देखो सुनने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना क्वेश्चन गाइस, राइट? कि सर ये ऐसे क्वेश्चन तो सर दिमाग खराब कर देंगे वहां पे। दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर, ठीक है? अब इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है? देखो एक ब्लैंक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट? और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डी ई ई सी बी। मुझे अगर सिर्फ ये पता लग जाए कि किस पार्ट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है, आई विल बी एबल टू एलिमिनेट रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, अब करके देखते हैं एक बार। विजन द क्वाड साइंस अप टू इन द, नहीं लग रहा है ठीक? आई डोंट थिंक दिस इज द ओपनिंग स्टेटमेंट। कोऑपरेशन अक्रॉस कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक, मे बी इंडो पैसिफिक रीजन and the multinational defense exercise Milan held in Visakhapatnam dash the, I don't think that is also the first statement. India is clearly the natural leader in the region in terms of the, हो सकता है yes, Australia High Commissioner to India Barry O'Farrell said. So what do you think is the first sentence guys? If you can just find the first sentence. आई थिंक डी इज द फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, इंडिया इज क्लियरली द नेचुरल लीडर इन, देखो जब आप शुरू करते हो सेंटेंस, आप यही इसीलिए मैंने आपको कोर्स में सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझाई थी कि सेंटेंस मोस्टली इट बिगिंस विद द सब्जेक्ट और इट में बिगिन विद अ प्रेपोजिशनल क्लॉज, राइट? तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कोई भी प्रेपोजिशनल क्लॉज नहीं था, तो आई थिंक द क्लियरली द फर्स्ट पार्ट इज डी, कि इंडिया इज क्लियरली द नेचुरल लीडर इन द रीजन इन टर्म्स ऑफ द so I think in terms of the vision, the Quad signs up to in the Indo-Pacific region, and the multinational defense exercise Milan held in Visakhapatnam demonstrates the cooperation across countries in the Indo-Pacific. Australia High Commissioner to India, Barry O'Farrell, said this. So this was a statement by this commissioner. So if you can find the first statement, I think the first statement was D. And अब word भी देख लो, ठीक है? Held in Visakhapatnam demonstrates the, showing the नहीं हो सकता, refutes the हो सकता था, demonstrates the हो सकता था, ठीक है? Verifying the, verifying नहीं हो सकता. So eliminate क्या करो? Now I can see क्या C से शुरू हो सकता है, ई से शुरू हो सकता है या डी से शुरू हो सकता है. आई कैन क्लियरली सी द सेंटेंस बिगिंस विद सेंटेंस नंबर डी. दिस इज द राइट अरेंजमेंट. इस तरह से ऑप्शन से इनको एलिमिनेट करके सॉल्व करना होता है हमें. सो ऑलवेज लुक एट द ऑप्शन फर्स्ट एंड देन ट्राई टू लुक एट द आंसर. अब मैंने क्या किया, मुझे लगा कि डी फर्स्ट पार्ट है, मैंने ऑप्शन में देखा किससे डी से शुरू हो रहा है, सिर्फ ए में था. मैंने इस सीक्वेंस को पढ़ के देखा कि मैंने डी से पढ़ के देखा कि इंडिया इज क्लियरली द नेचुरल लीडर इन द रीजन इन टर्म्स ऑफ द विजन, द क्वाड साइंस अप टू इन द क्या बोलते हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड द मल्टीनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज मिलान हेल्ड इन विशाखापट्टनम डेमोन्स्ट्रेट्स द कोऑपरेशन अक्रॉस कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक. Australian High Commissioner to India, Barry O'Farrell, said this. So
ऑप्शंस के हेल्प से एलिमिनेट करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. सो आई वांटेड टू सॉल्व वन फॉर यू कि आपको अप्रोच समझ आए कि कैसे ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं वहां पे कि सेंटेंस रीशफलिंग वाले क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस इन द एग्जाम. राइट. सो गाइज, आर यू रेडी? गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स. आर यू रेडी? और अगर अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं गाइज, तो इफ यू फील कि हाँ यार ये है एक्चुअली एग्जाम का लेवल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रेडी फॉर मोर सच क्वेश्चंस. अब मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, अब मैं चुप रहूंगा बिल्कुल. आई विल बी क्वाइट एंड आई आस्क यू टू टू आंसर द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. रेडी? चलो. तो आई विल बी क्वाइट नाउ. आई विल आस्क यू टू आंसर द क्वेश्चन. आई विल वेट फॉर योर आंसर्स. ठीक है, अब ऐसे करना है आपको. ठीक है, एंड डोंट हरी अप, डोंट जस्ट जंप द गन. ठीक है, टेक योर टाइम, बिकॉज गाइज सिर्फ एफिशिएंसी नहीं, एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में. एक्यूरेसी इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि अगर आपने जल्दी जल्दी में कर तो दिया, लेकिन छोटे से उसमें अगर वो गलत हो गया, इट इज अ ब्लंडर. याद रखना. ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. So I'll read the sentence for you. Now you have to rearrange it. To use his good offices and urge the center to come to the aid of the Indian students believed, the Supreme Court asked Attorney General K.K. Venugopalan, the Ukrainian border even as the crisis dash to be stuck without food, water and money at. I have got my answer. Let's see if you've got yours. Even as the crisis strengthens, Amit, crisis strengthen होता है. Very good Vasu, very good Harshita, very good Amit, very good Neeraj. See clearly guys, the very good Neeraj. अरे नीरज स्पैम मत कर भाई, बोल दिया यार. क्लियरली हमें दिख रहा था. द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज सी. द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड अटॉर्नी जनरल वेणु गोपालन. सी से कितना शुरू हो रहा था? ए, डी एंड ई, तीन शुरू हो रहे हैं. अब ये देख लो सी के बाद क्या आ रहा है? ए या बी. अब सी के बाद ए आना चाहिए या बी आना चाहिए, वहां से और ब्रॉड हो जाएगा आपका एलिमिनेशन. राइट. तो मैंने देख लिया. द सुप्रीम कोर्ट आज अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपालन टू द एड ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स बिलीव्ड, तो बी तो नहीं आ रहा. सो द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपालन टू यूज हिज गुड ऑफिसेज एंड अर्ज द सेंटर. हाँ ये लग रहा है सी के बाद ए बन रहा है आई थिंक क्लियरली. सो सी ए इज द राइट. सो सी बी कैन बी एलिमिनेटेड. अब वर्ड देख लो. एज द क्राइसिस बूस्ट्स या एज द क्राइसिस डीपन्स. क्राइसिस डीप होता है गाइस, क्राइसिस बढ़ता है. राइट. तो अब इसको इस सीक्वेंस में पढ़ के देखो एक बार कि द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपालन टू यूज हिज गुड ऑफिसेज एंड अर्ज द सेंटर टू कम टू द एड. उसके बाद बी था टू द एड ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स बिलीव्ड. फिर आएगा ई. हाँ, बिलीव टू बी स्टक विदाउट फूड, वाटर एंड मनी एट द यूक्रेनियन बॉर्डर इवन एज द क्राइसिस डीपन्स. राइट. सो आई थिंक दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. वेरी वेल डन गाइस. कीप अप द गुड वर्क. सो ऐसे आपको सॉल्व करना है एग्जाम में भी. वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड मोहित, प्रिया, नीरज. कीप इट अप, कीप अप द गुड वर्क गाइस. ठीक है, तो अब ऐसे आपको फटाफट से सॉल्व करने हैं आगे क्वेश्चंस. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. Revealed the Naveen Patnaik led Odisha's ruling Biju Janata Dal is heading towards a party had dash its strong grip in the coastal state. BJP and Congress far behind us counting on Monday. Landslide victory in the three-tier panchayat polls, leaving opposition. Hmm. Tightened its grip, increased its grip, expanded its grip, elaborated its grip, yet developed its grip. हर्षिता एक बार सी ऑप्शन भी ट्राई करके देखो.
वो भी तो बी से शुरू हो रहा है। वेरी गुड निरंजन, वेरी गुड नवीन, वेरी गुड बेनतल. See, well tried, guys, but the correct option is option number C. Clearly, first sentence was, देखो, revealed the Naveen Patnaik led. Verb से शुरू नहीं होता sentence कभी भी. Party had dash its grip on the coastal state. Doesn't make any introductory sentence. BJP and Congress far behind as counting on Monday. Doesn't make sense. Landslide victory. No. The first sentence was option number B. Odisha's ruling Biju Janata Dal, right? Odisha's ruling Biju Janata Dal is heading towards a landslide victory. Then it should be E. So B and E, that was the complete relation here. So let's read it now in this sequence. Odisha's ruling Biju Janata Dal is heading towards a landslide victory in the three-tier panchayat polls, leaving uh, opposition BJP and Congress far behind as counting on Monday revealed the Naveen Patnaik led party had expanded its strong grip in the coastal state. That is the correct answer. Okay, so the correct answer here was option number C. ठीक है. अब सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ये एग्जाम के ही पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं क्वेश्चंस. सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट यू डू नॉट लीव सच क्वेश्चंस. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने पड़ेंगे हमें, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्विकली आई विल रीड आउट द सेंटेंस टू यू एंड make sure that you do not get confused this time. Home Minister Amit Shah saying the party would. The BJP dash confidence over its. Third, sees chances in the 5 assembly elections with. D is form the government in Uttar Pradesh, Goa, Manipur and Uttarakhand. And last, and improve its performance in Punjab. Hmm. टेक योर टाइम गाइस, कोई जल्दी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि अभी के अभी आंसर करना है. टेक योर टाइम. ठीक है, जो आप ऑप्शन चूज करो उसका पूरे सीक्वेंस एक बार बना के देखो कि सीक्वेंस सही बन रहा है या नहीं बन रहा है एट द एंड, जो आपने ऑप्शन चूज किया है. शांतनु, हर्षिता, एक बार जो ऑप्शन आपने चूज किया है उसे शुरू करके देखो. नो निरंजन. कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे सारे स्मॉल से शुरू हो रहे होंगे. ठीक है, ऐसे वो हिंट नहीं देगा वो आपको कि कैपिटल से शुरू होगा या स्मॉल से शुरू होगा. वो ऐसे ही होता है. वो तो ये यहाँ पे एक्चुअली वो वर्ड डॉक्यूमेंट की वजह से शायद वो ऑटोमेटिकली वर्ड फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर देता है, वहां पे आपको सारे स्मॉल मिलेंगे. नहीं गाइज, नोबडी हैज बीन एबल टू रीच द राइट आंसर. जो ऑप्शन ए कर रहे हैं गाइज, एक बार आप अपना ऑप्शन पढ़ के देखो एक बार सीक्वेंस. आपने क्या बोला है? ADCBE. सो होम मिनिस्टर अमित शाह सेइंग द पार्टी वुड, अमित शाह सेइंग द पार्टी वुड, देन द पार्टी वुड फॉर्म द गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड. देन सी चांसेस इन द 5 इलेक्शन. ये ऐसे सेंटेंस थोड़ी होता है यार. नहीं, ये तो कोई सीक्वेंस नहीं बना. होम मिनिस्टर अमित शाह इज सेइंग होता तो मैं मान सकता था कि होम मिनिस्टर अमित शाह इज सेइंग द पार्टी वुड फॉर्म द गवर्नमेंट. नहीं, द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर ई. देखना, द बीजेपी एक्सूडेड, एक्सूड का मतलब होता है टू शो, दिखाना, टू प्रेजेंट. सो द बीजेपी एक्सूडेड कॉन्फिडेंस ओवर इट्स, क्या था बी के बाद सी, हाँ, ओवर इट्स फॉर्म, नहीं, ओवर इट्स चांसेस. हाँ, द बीजेपी एक्सूडेड कॉन्फिडेंस ओवर इट्स चांसेस इन द 5 असेंबली इलेक्शंस विद Home Minister Amit Shah saying the party would form the government in Uttar Pradesh, Goa, Manipur and Uttarakhand and improve its performance in Punjab. So the BJP exuded confidence over its chances in the 5 assembly elections, with Home Minister Amit Shah saying the party would form government in Uttar Pradesh, Goa, Manipur, Uttarakhand and improve its performance in Punjab. That was the right answer.
So very good, Vasu. You've got the right answer. But guys, why are we not exploring other options? हम ब्लॉक क्यों हो जा रहे हैं, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आई थिंक वी आर डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. ऐसा मत करो कि सर हमें लगना नहीं होता. मैं बोल रहा हूँ आपको, जो ऑप्शन आप चूज कर रहे हो एक बार उस सीक्वेंस में फिर पढ़ के तो देख लो एक बार सेंटेंस को, वो ठीक लग भी रहा है नहीं लग रहा है. डी से शुरू हो सकता है सेंटेंस. फॉर्म द गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश. बिहार. फॉर्म द गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश. गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड. Then and improve its performance in Punjab. Chances in the 5 assembly elections with. Doesn't make sense. So it should be in the logical order when you rearrange it. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं गाइज, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक श्योर कि ये सही हो सभी का. ठीक है, सो टारगेट वो होना चाहिए हमारा. इंडिया ऑन फ्राइडे डैश इन अ वोट इन द UN Human Rights Council that has decided to urgently commission of inquiry as a result of Russia's aggression against Ukraine, establish an independent international. Hmm. Very good, Mohit. Very good, Vasu. Very good, Amit. Very good, Yukta. Very good meditation. Very good, HSS. Very good, Niranjan. Very well done, guys. See, the right answer was D. The sequence was A, B, E, C, D. India on Friday abstained in a vote in the UN Human Rights Council. So, India on Friday abstained in a vote. देखो, vote में halted in a vote, rejected in a vote, refused in a vote, abstained या declined in a vote. ठीक है, तो India on Friday abstained in a vote in the United Nation Human Rights Council that has decided to urgently establish an independent, फिर आना चाहिए था E, to urgently establish an independent international commission, फिर इसके बाद आना था C, commission of inquiry as a result of Russia's aggression against Ukraine. So the correct answer was option number D. No, you should always start with a capital letter. ये तो phase 1 की बात हो रही है. When you will be writing your answer, the first letter of every sentence has to be capital along with the proper nouns. So proper nouns and first letter of every sentence is to be kept capital. राइट. चलो गाइस, तो ये तो थे कुछ न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. और देखते हैं गाइस, नाउ लेट्स लुक एट सम अदर न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. मैं आज ना बिल्कुल अलग तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ गाइस, जो आपको एग्जाम में फेस करने पड़ सकते हैं. बिकॉज देखो, जो नॉर्मल है विच इज आउट देयर इन द पब्लिक डोमेन, ठीक है, वो सब करके जाते हैं यार. ठीक है, वो सबको पता भी है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पिछले सालों में आए हैं, वो सब कर रहे हैं. लेकिन एक चीज़ जो नहीं ऑब्जर्व कर रहा कोई भी स्टूडेंट, के यार हर साल एक न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन भी तो आता है. तो अब की बार क्या आ सकता है? सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू विद, कि आई एम ब्रिंगिंग न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू. आपने अभी तक देखा है ऐसे क्वेश्चन, आपने आज से पहले शायद किसी नाबार्ड या और किसी ऐसे एग्जाम में नहीं देखे होंगे, बट अब एग्जाम में, क्योंकि वो हर साल नए टाइप ऑफ क्वेश्चन डालता है, तो आई वांटेड कि कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले यहाँ पर. ठीक है, अब देखना और कॉम्प्लिकेटेड कुछ है. डायरेक्शंस पढ़ते हैं ध्यान से. द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव अ सेंटेंस ईच दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स व्हिच हैव बीन जम्बल्ड. ठीक है, there are certain words as well that have been highlighted and might need to be swapped with each other in order for the sentence to become meaningful. Okay, so उसने एक सेंटेंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, ABCD, उनको शफल भी कर दिया है, और फिर कुछ वर्ड उसने बोल्ड कर दिए हैं और जिनको हमें स्वैप करना पड़े टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल. सो यू नीड टू रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस केयरफुली and choose the option that provides the best rearrangement and swapping pair. Right?
कि स्वैपिंग पेयर कौन सा किससे स्वैप होना चाहिए, वर्ड वो दिया हुआ है, देखो ये वर्ड दिया हुआ है, उनको उसने नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, और सेंटेंसेस को उसने दिया हुआ है ABCDE, सेम वही जो हम अभी कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, फिल इन द ब्लैंक की जगह अब यहाँ पे स्वैप करना है वर्ड्स को हमें। सो अगेन द सेम लॉजिक कि हमें फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना है, मतलब बिगिनिंग ढूंढना है, शुरू किससे हो रहा है, उससे हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। सो दोबारा करके देखते हैं ट्राई। इंडस्ट्री बैन एटलीस्ट 60% ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स कुड not be produced without this chemical. The globe is a concern as the claims on barium nitrate, and last is an oxidizing agent used in making fireworks across the globe. अब देखो ये तो मुझे दिख रहा है across के बाद किससे कनेक्ट होना चाहिए, ई के बाद across the globe is a concern एज द, तो अगर मुझे आपको ऐसे भी मिल जाता ना अक्रॉस के बाद अक्रॉस द इंडस्ट्री, अक्रॉस द क्लेम्स, अक्रॉस नॉट टू बी, तो आई थिंक अक्रॉस द ग्लोब, ये मुझे क्लिक किया एकदम से कि अक्रॉस द ग्लोब ये था, तो आई थिंक ई के बाद क्या आना चाहिए, सी, राइट। ई के बाद सी किसी में है, एक बार ये देख लो, इस तरह से अगर आपको मिलता है ई के बाद सी इसमें है, ई के बाद सी सिर्फ एक में ही बन रहा है वैसे तो, बट पोटेंशियली हो सकता है, तो देखते हैं एक बार। The claims on barium nitrate, the ban on barium nitrate, the produced on barium, अच्छा इसमें क्या करना है, पहले आपको वर्ड्स को रीअरेंज कर लो, the concern on barium nitrate नहीं, the produced on barium nitrate nahi, the ban on barium nitrate, yes. So I think this should be replaced with this. So 1 with 4, इंडस्ट्री क्लेम्स एटलीस्ट 60% ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स कुड नॉट बी, हाँ ये सही बन रहा है, तो यहाँ पे होना चाहिए आपका बैन, द बैन ऑन बैरियम नाइट्रेट, और यहाँ पे होना चाहिए आपका क्लेम्स, ठीक है। सो द बैन ऑन बैरियम नाइट्रेट an oxidizing agent used in making fireworks across the globe, हाँ ई के बाद ये सी आ रहा है, across the globe is a concern as the, अब सी के बाद as the industry claims at least 60% of its products could not be produced without this chemical. So I think the right, हमें राइट सीक्वेंस मिल गया, तो इसमें हमें अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाते हैं, रीअरेंज द वर्ड्स फर्स्ट, राइट, हमें पता लग गया 1 का रिप्लेसमेंट 4 के साथ होना चाहिए, ये भी सही बन रहा है, सीक्वेंस भी हमारा सही बन रहा है, दिस इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। Tenses, articles, Vasu, subject verb agreement is a very important topic. Other than that, you can also you should also practice complex prepositions and phrasal verbs. अगले 2-3 दिन में अगर आप ये 2-3 टॉपिक कर लेते हो, this would help you a lot. एग्जैक्टली exactly, युक्ता, बट स्टिल हमें वो कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना, हमें श्योर तो होना पड़ेगा, आई वाज एक्सप्लेनिंग कि कैसे सॉल्व करना होता है, बट जो ऑप्शन आपने चूज कर लिया, फिर उसका एक बार आपको बस 10-15 सेकंड लगेंगे, एक बार उस पूरे सेंटेंस को सीक्वेंस में पढ़ के देख लो, ताकि ये ना हो कि कोई छोटी सी गलती हो जाए, क्योंकि देखो डी से और भी शुरू होते हैं ऑप्शन, ये देखो ए भी शुरू हो रहा है, तो देर मे बी ए चांस कि वहां पे कुछ और बन रहा हो, तो 1 with 4 हो सकता है, 1 with 4 और किसी ऑप्शन में मिल जाता आपको, राइट। सो जस्ट मेक श्योर के वो प्रूफ रीडिंग हो जाएगा, आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि दिस इज करेक्ट, राइट। बट वेरी वेल डन युक्ता, सो वेरी वेल डन गाइज। नाउ have you understood the way to solve such questions? I think you have. Now I'll not help you, now you have to solve it on your own, okay? So question number 12 in front of you, so try this question and give me the answer. ट्रैवल केम टू अ हॉल्ट, ठीक है, इसमें 2 सेंटेंसेस हैं बाय द वे गाइस, देखो फुल स्टॉप भी दिया हुआ है, तो आपको 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। ट्रैवल केम टू हॉल्ट, ठीक है, द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पीपल वर नॉट ट्रैवलिंग एंड रेवेन्यू सिवियरली फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रैवल्स ड्रॉप्ड अर्नड। पहले वर्ड्स को स्वैप करो गाइस, रीअरेंज बाद में करेंगे, बिकॉज वर्ड्स स्वैप हुए बिना रीअरेंज नहीं हो पाएगा।
Yes, guys, what is the right option? Very well done. The correct answer was option number D. First was C. People were not traveling and domestic and international, then travel came to a halt. ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस था कि people were not traveling and domestic and international travel came to a halt. Then the next sentence begins, the revenue, then after A should be D, earned the revenue earned from international travels dropped severely. That was the right sequence. So people were not traveling and domestic and international travel came to a halt. The revenue earned from international travel dropped severely. So the correct answer was option number D. Very well done, guys. Keep it up. Next, question number 13. Okay. Chalo, guys. So I'm giving this question to you. Quickly solve this and give me the right answer. वेरी गुड. अगर आपको वर्ड रिप्लेसमेंट अगर आ गया है तो आई थिंक यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर वेरी इजीली. Very well done, guys. The correct answer was option number A. The first sentence was the disbelief. Narrative की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था? The disbelief soon turned into anger. और यहाँ पे होना चाहिए था the narrative built by Samta Party, SP. SP leader Akhilesh Yadav. So the disbelief soon turned into anger, primarily against the electronic voting machines, which, as per the narrative built by the SP leadership, especially party President Akhilesh Yadav, stole what was their rightful mandate. So that was the right sequence. Very well done, guys. Keep it up. One more question like this, and then we'll practice more such questions. Yes, guys. Very good. No swapping is required, Shikhar. Very good. Very good, Riya. Very good, Jishnu. Very good, Yukta. Keep up the good work, guys. चलो जल्दी से बताओ. Very good, Shantini. The right answer is absolutely correct. Option number C. The sentence was absolutely correct. His wisdom, his sense of humor, his joy de vivre, his easy sociability, and his wonderful gift of being a good raconteur endeared him to all who came across him. Right? So,
नो स्वैपिंग वाज रिक्वायर्ड एंड द सेंटेंस वाज एब्सोल्युटली इन सीक्वेंस। ऐसे भी आपको कभी कभी वहां पे मिल जाएंगे, सो डोंट जस्ट एक्सपेक्ट के वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ वो उल्टा पुल्टा ही मिलेगा, तो देयर प्लीज बी रेडी फॉर सच क्वेश्चंस एज वेल। वेरी वेल, वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड एच एस एस, वेरी गुड सॉरी। चलो गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब इसमें हमें क्या करना है, 5 sentences have been given in each question below, one of which is an odd man out. You are required to read the same carefully and choose the option with the odd sentence as your answer. ठीक है, अब ये देखो, ये ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना जो ऑड वन आउट वाले, ये एंड में आराम से टाइम लेके करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। पहले छोटे क्वेश्चंस करो। अब अगर पहले 14 क्वेश्चंस मेरे में से अगर मेरे 12 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन ठीक हो गए, तो आई विल हैव द पीस ऑफ माइंड कि यार जो मेरी कट ऑफ जानी है उससे ऊपर मेरे मार्क्स निकल गए हैं, आई विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल। तो दैट विल गिव यू अ गुड गुड फ्लो इन द एग्जाम। तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं आपको अटेम्प्ट गाइस, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, 5 sentences दिए हुए हैं, इसमें एक सेंटेंस ऑड वन आउट है इन विद विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट 4 sentences वी हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। तो फटाफट से पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे ऑड वन आउट ढूंढा जाता है इसमें। ऑन March 29 असम एंड मेघालय partially resolved a 50-year-old dispute along their 884.9 kilometer boundary, okay. Meghalaya was carved out of Assam as an autonomous state in 1972, okay. It was facilitated by Home Minister Amit Shah, who urged the states to resolve their boundary disputes by 15 August 2022. Okay, according to the partial boundary deal, Assam will get 18.51 square kilometer of the 36.79 square kilometer of disputed area. Apart from Meghalaya, the other states are Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Tripura, and West Bengal. Yes, guys. Very well done, guys. The correct answer is apart from Meghalaya, other states are Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Tripura. See, बात यहाँ पे शुरू ही असम एंड मेघालय से हुई थी, right? So this was the odd one out. Very well done, guys. Keep it up. Next question. We have to read the sentences and we have to find which is the odd one out. Germany would not preach or teach India about its position on Russia's war in Ukraine. For the success of this platform, we require all countries to be present. If the Russian action goes unchecked, I think it will be really devastating for all of us. Mr. Plotner's visit coincides with a number of other visits to Delhi carrying a similar message on Russia, and all the statements are related to each other. Now, this can also be an option here. There is no odd one out. Very good, Harshita. See, देखो, Germany would not preach or teach India about its position on Russia's war in Ukraine. If the Russian action goes unchecked, I think it will be really devastating for all of us. Mr. Plotner visits coincides with a number of other visits to Delhi carrying a similar message on Russia. So this was all about Russia-Ukraine war. But for the success of this platform, we require all countries to be present. Doesn't make any sense. So B was the odd one out. Okay. So B was the right answer. Next question, guys. अरे बाप रे बाप, बड़े sentences हैं, तो let's try this. The BJP had constituted a 5-member team in the aftermath of the violence in which 8 people were burnt alive. Okay, so the BJP had constituted a 5-member team in the aftermath of the violence in which 8 people were burnt alive. The 5 members on the panel include Rajya Sabha member and former Uttar Pradesh Director General of Police Brijlal. Okay, Brijlal.
ठीक है. Following an order of the Calcutta High Court, the Central Bureau of Investigation has taken over the probe into the Birbhum violence. Okay. West Bengal BJP chief Sukanta Majumdar met BJP president JP Nadda and presented the report on Wednesday. ठीक है. Claiming that state-sponsored extortion, gunda tax and cut money were the main reasons for the violence, the reports said the center should intervene. Yes, guys, which sentence do you think is the odd one out? I know it's a tricky one. Very good, Shantini. जब बीजेपी ने एक 5 मेंबर टीम बना दी है, उसके लिए रिपोर्ट जा चुकी है सेंटर के पास. सो व्हाट इज सीबीआई डूइंग हियर? Following a order of Kolkata High Court, the CBI has taken over the probe into the Birbhum violence. See, the BJP constituted a 5 member team. बिल्कुल ठीक है. The 5 member panel included Rajya member this. ठीक है. West Bengal BJP chief Sukanta Majumdar met BJP Nadda and presented the report on Wednesday, claiming that the state-sponsored extortion, gunda tax, cut money were the main reasons for the violence. The report said the center should intervene. यहाँ पे CBI का कोई जिक्र नहीं था इसमें. So that was the odd one out. Presented a report. हर्षिता, और ये देखो, the report said center should intervene. हो सकता है युक्त, कहीं आपने देखा हो पहले ऑनलाइन. चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's read the sentence. Let's find the odd one out. A World Cup like no other in its 92-year history will take shape this week. Okay, Qatar will be the top seeded team in Group A, taking position A1 in the schedule. Qatar's debut opens the tournament November 21 at Al Bayat Stadium. The entry list for the forthcoming Federation Cup Athletics has been released, and it means in the group stage, Qatar avoids the world's top-ranked team from number 1 to 7. आई थिंक ये तो बहुत ईजी है यार. वेरी गुड युक्ता, वेरी गुड शिखर. वेरी वेल डन गाइस. द एंट्री लिस्ट फॉर द फोर्थ कमिंग फेडरेशन कप, यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है. So this is the odd one out. So it's easy if you're calm, if you're composed, if you're well practiced, you'll be able to solve such questions. Panic नहीं करना है guys, ठीक है? It's all about keeping your calm and be consciously present in the exam. उस टाइम पे दिमाग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कहीं और कि आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, कितने मार्क्स बनेंगे. वहाँ ये चीज़ नहीं आनी चाहिए. वहाँ पे सिर्फ फ्लो होना चाहिए. क्वेश्चन सॉल्व करा, अगर ठीक है आंसर मार्क किया, नहीं आगे बढ़ गए. दैट शुड बी योर अप्रोच. ठीक है, वहां पे फंसना नहीं है, रुकना नहीं है. सो ट्रेन योर ब्रेन लाइक दैट कि जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो उस टाइम पे मुझे आउटकम उसका कितने मार्क्स आएंगे, कितने ठीक होंगे, वो नहीं देखना है. वो उसकी चिंता नहीं करनी है. देखना तो है ऑब्वियसली, बट उसकी चिंता नहीं करनी है. तो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन लाइक दैट. ठीक है, वेरी वेल डन गाइस. चलो न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं गाइस. लेट्स जंप हेयर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let's read the directions first. In each of the questions below, a sentence followed by a table with 2 columns has been given. The sentence has got 2 blanks that would take words from the columns respectively. Choose the correct combination of words that complete the given sentences meaningfully. Okay, so आपको एक sentence दिया है, उसमें 2 blank हैं और 2 blanks के लिए आपको यहाँ पे कॉलम में दिए हुए हैं. तो फर्स्ट ब्लैंक के लिए ये 3 वर्ड्स हैं, सेकंड ब्लैंक के लिए कॉलम 2 में दिए हुए हैं आपको 3 वर्ड्स, और आपको चूज करना है कि ए बी सी डी ई एफ, ये कौन सा पेयर बनेगा इसमें से जो यहाँ पे फिट बैठेगा इन ब्लैंक्स में. राइट, सो लेट्स रीड द सेंटेंस एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. आई फॉलोड द डैश ऑफ द इलेक्शंस इन द 3 of the 5 states and shall therefore dash my observations to those states. I followed the mandate of the elections. I followed the course of the elections. I followed the trend of the elections in 3 of the 5 states, and shall therefore confide my observations
obstruse my observations to those states और restrict my observations to those states. अगर आपको ये पता लग गया कि यार एक ब्लैंक में फिट कौन सा वर्ड बैठ रहा है तो you'll be able to find it. Obstruse का मतलब क्या होता है मोहित, पता है अमित? सेकंड ब्लैंक भी देख लो. ऑब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक ब्लैंक थोड़ी फिल करना है, दोनों फिल करना है गाइस. द करेक्ट आंसर वाज ई. ठीक है. आई फॉलोड द कोर्स ऑफ द इलेक्शंस इन 3 of the 5 states. ठीक है. एंड शैल देयर फॉर रिस्ट्रिक्ट माई ऑब्जर्वेशन टू दो स्टेट्स. कन्फाइड का मतलब होता है किसी को मतलब किसी को अपनी राज की बात बताना. ठीक है. ऑब्स्ट्रूस ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट से बनता है ऑब्स्ट्रूस. ठीक है. तो किसी चीज को ऑब्स्ट्रूस करना. रिस्ट्रिक्ट होता है कि मैं वहीं तक सीमित रखूंगा अपनी बात को कि मैंने 5 में से 3 स्टेट के इलेक्शंस को फॉलो किया है और मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं मैं उन्हीं 3 स्टेट्स तक रिस्ट्रिक्ट कर रखूंगा. दैट वाज द राइट आंसर. ठीक है. तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप ये गलतियां ना करो ऐसे ऐसी. एंड राइट. तो डोंट जस्ट जंप द गन. दोनों ब्लैंक्स को फुल करके फुल मतलब कंप्लीट करके चलो. ठीक है. ट्रेंड हो सकता है लेकिन सेकंड में क्या करोगे आप? सी के साथ फिर कॉम्बिनेशन किसका बनाता है वो भी तो देखो ना सागर. सी होता ट्रेंड होता लेकिन सी के साथ ई का कॉम्बिनेशन. द ट्रेंड एंड रिस्ट्रिक्ट. द ट्रेंड ऑफ द 3 इलेक्शंस. ठीक है. सी सॉरी द ट्रेंड ऑफ फिर ऑब्स्ट्रूस होता है इसके साथ, फिर वो गलत हो जाता है सी के साथ ई वाला सागर. एग्जैक्टली exactly. तो ऑब्स्ट्रक्ट मैच नहीं हो रहा, दोनों मैच करना है. ठीक है. तो आई थिंक यू नो नाउ हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. राइट. चलो next. So now I want you to solve these questions on your own. Tamil Nadu students pursuing MBBS in Ukraine have returned home after dash and dash. कॉलम 1 के लिए चेक्स, डिप्लोमेसी, ट्रायल्स, endeavors, tribulations and balances. Yes guys, क्या आना चाहिए? बी. चेक्स एंड बैलेंसेस. चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है पता है? मतलब जमा घटा करने के बाद. डिप्लोमेसी एंड ट्रिबुलेशंस नहीं. अगर गाइस आपने पढ़ा नहीं है ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस. ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन का मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव के बाद. उतार चढ़ाव के बाद जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस. गाइस रीडिंग हैबिट डेवलप करो, एडिटोरियल्स पढ़ा करो विद सो मेनी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस. ठीक है. कि उतार चढ़ाव के, मुश्किलों के बाद, कठिनाइयों के बाद तमिलनाडु के बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स को यूक्रेन से वापस ले आया गया है. सो द राइट कॉम्बिनेशन वाज ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस. सो सी विद ई लिखा है कहीं ऑप्शन. ये देखो, ये है करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी वाज द राइट ऑप्शन. वेरी गुड शिखर. शिखर ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया था. कीप अप द गुड वर्क. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस केयरफुली दिस टाइम. Keeping in mind the dash of the question papers, the marks indicated that a certain level of dash has been done by the board. Keeping in mind the dash of the question papers, level of the question papers, syllabus of the question papers, and difficulty of the question papers, the marks indicated that a certain level of bias has been done, certain level of moderation has been done, a certain level of normalization has been done.
कीपिंग इन माइंड द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर द मार्क्स इंडिकेटेड के कुछ बायस है उसमें। क्वेश्चन पेपर का लेवल देखते हुए ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ बायस किया है बोर्ड ने। बायस किसके लिए किया होगा यार? द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड रियाबा। द करेक्ट आंसर इज both C and D are correct. See, the level of the question paper, keeping in mind the level of the question papers, the marks indicated that a certain level of normalization has been done by the board. Yeah, keeping in mind the difficulty of the question paper, the marks indicated that a certain level of moderation has been done by the board. So दोनों यहाँ पे पैर ठीक बैठते थे, तभी ऑप्शन पूरे देखा करो guys. Both C and D were correct. C with E was also correct. C with E and A with F, level and normalization, that was also correct. ठीक है, वेरी वेल डन गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड इन इंडिया in the first major elections held after the 3 waves of COVID-19, people from dash regions and far off states seem to be dash in one voice. And in India, the first major elections held after 3 waves of COVID-19, people from dash regions, myriad regions, diverse regions, yeah, proletariat regions, and far off states seem to be speaking in one voice, enunciate in one voice, yeah, articulating in one voice. थैंक यू सागर, तभी एग्जाम में फेस कर पाओगे आप ऐसे क्वेश्चंस को। अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट? नहीं तो सब कर ही रहे हैं ना यार खुद से। अगर चैलेंजिंग ना हो तो मजा क्या है फिर उसमें, राइट? वेरी वेल डन गाइस, आई थिंक ये इजी था, ये सबको मिल जाएगा आंसर इसका, राइट? वेरी वेल डन। द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर सी के people from diverse regions and far off states seem to be speaking in one voice. के इतने टाइम बाद जब इलेक्शन हुए तो अलग अलग जगह के लोग जो इकट्ठा आए हैं वोटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए, वो सब एक ही आवाज में बोल रहे हैं। चलो, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न। Russia's dash of Ukraine has placed considerable moral responsibility on India, both as one of the world's largest countries and its most dash democracy. So Russia's dash of Ukraine, annexation, attack, yeah, invasion of Ukraine has placed considerable moral responsibility on India, both as one of the world's largest countries and its most sought after democracy, populist democracy, or looked upon democracy. Yes, guys, what do you think is the right answer? शालिनी, मुझसे पूछ रहे हो आंसर, मैं तो बता ही दूंगा, बट आप अपना आंसर बताओ, व्हाट डू यू थिंक? देखो, बी तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, रशिया अटैक ऑफ यूक्रेन तो नहीं हो सकता ना, अटैक ऑन होता, अगर अटैक होता तो बी वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट सीधा हो जाता है, राइट? ना बचे एनेक्सेशन और इन्वेजन, ये दोनों हो सकते थे इधर सॉट आफ्टर, ठीक है, पॉपुलस या लुक्ड अपॉन। लुक्ड अपॉन होता है किसी की तरफ देखना, ठीक है, किसी की तरफ नीचा, मतलब दे लुक अपॉन अस, मतलब वो ऊपर के नजरिए से हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो लुक अपॉन इज अ रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। तो पॉपुलस या सॉट आफ्टर हो सकता था, तो ए डी या ए ई, सी डी या सी ई। अब सी ई था हमारे पास, ए डी था हमारे पास, ठीक है, और सी डी था हमारे पास, ठीक है। लेकिन रशियाज एनेक्सेशन ऑफ यूक्रेन या रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज प्लेस्ड कंसिडरेबल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इंडिया, बोथ एज वर्ल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्रीज एंड इट्स मोस्ट सॉट आफ्टर डेमोक्रेसी। तो सी विद डी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पे। एनेक्सेशन और इन्वेजन में क्या फर्क होता है गाइस, पता है किसी को? अब जब इतना क्लोज हो जाता है ना ऑप्शन, तब आपको वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग पे जाना पड़ता है, राइट? करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कि रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अब एनेक्सेशन क्या होता है और इन्वेजन क्या होता है? एनेक्सेशन होता है किसी जो जगह आपकी नहीं है उस जगह को अपनी अपनी बाउंड्री में जोड़ लेना,
ठीक है, दैट इज एनेक्सेशन। एनेक्सेशन बहुत तरह से होता है, ठीक है, कई बार डिप्लोमेटिकली भी होता है कि भाई बातचीत हुई और एक जगह की जो एक जगह थी वो दूसरी बड़ी जगह के साथ एनेक्स हो गई। जैसे कश्मीर का एनेक्सेशन हुआ था इंडिया के साथ, अगर आपने पढ़ा है तो हिस्ट्री में, कि कश्मीर वाज एनेक्स टू इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, राइट, मतलब बिफोर द इंडिपेंडेंस एनेक्सेशन हुआ था, वो जुड़ा था इंडिया के साथ। इन्वेजन का मतलब होता है अटैक करके किसी के ऊपर वो करना, तो यहाँ पे इसलिए एनेक्सेशन सही नहीं था, इन्वेजन वॉज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आप फर्स्ट वाला अगर कर लेते ना रियाबा, तो फिर सेकंड वाला हो जाता आपसे। फर्स्ट में क्लियर है, सी होना चाहिए। तो ई पॉपुलस डेमोक्रेसी की वजह से हमारी तरफ देख रहे हैं, नहीं सॉट आफ्टर, तो वो क्लियर हो जाता है, सी विद डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। एग्जैक्टली, पोजेशन टेकन ऑफ ए पीस ऑफ लैंड, पर पोजेशन बहुत तरह से होता है ना शालिनी, सिर्फ फोर्सफुली नहीं होता, कई बार वो म्यूचुअली एग्री, म्यूचुअली भी होता है, कई बार वो लीगली भी होता है, गवर्नमेंट भी कई बार एनेक्स करती है जगह को, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ जो सही वर्ड था इन्वेजन था, राइट। वेरी वेल डन। विशाखा इज ऑल्सो हेयर, गुड। चलो गाइस, तो लेट्स लुक एट अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो ये पैसेज है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ गाइस, ठीक है। ये आखिरी के 6 क्वेश्चन है, ये मैं आपको आज होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तो आई थिंक ये आप कर पाओगे, या ये भी यही करना है। ओके चलो, लेट्स सी गाइस, अभी करना है या होमवर्क के लिए करना है, व्हाट डू यू से? यू वांट टू ट्राई इट राइट नाउ और डू यू वांट टू टेक इट एज होमवर्क? बताओ गाइस, हाउ डू यू वांट इट? डू यू वांट टू डू इट नाउ और डू यू वांट टू टेक इट एज होमवर्क? अभी करना है, डन, अभी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू आर रेडी फॉर इट। कुछ कह रहे हैं होमवर्क के लिए, चलो जिसको होमवर्क में करना है वो होमवर्क में कर लेना। वैसे मैंने होमवर्क के लिए अलग से क्वेश्चन दिए थे आपको बाय द वे, ठीक है। तो वो हम वो मैं वो भी दूंगा आपको, वो इसकी पीडीएफ में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। एंड यू कैन गेट द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक फॉर विच हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यू कैन यूज इट एंड प्रैक्टिस थ्रू इट, राइट। चलो अभी करते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अप्रोच क्या होती है, वी ऑलवेज हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, राइट। तो क्वेश्चंस पहले देखने हैं ताकि हम डिसाइड कर पाए हमें किस स्पीड से और किस चीज को टारगेट करना है, दैट इज व्हाट वी कॉल रिवर्स रीडिंग, राइट। तो पहला क्वेश्चन, 3 sentences हैव बीन गिवन टू यू, यू हैव टू रीड द सेम एंड चूज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड करेक्टली टेक द इडियम सी आई टू आई एज यूज्ड इन द पैसेज। अच्छा, तो 3 ब्लैंक दिए हैं, इनमें से कौन सा सेंटेंस में सी आई टू आई, ठीक है, इनमें से सही फिट बैठता है, तो हमें ये ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन्स द ओपनिंग लाइन ऑफ द पैसेज, ठीक है, जो ओपनिंग लाइन है वो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो ओपनिंग लाइन पे ध्यान रखना गाइस, प्लीज जॉट इट डाउन। नेक्स्ट, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मिस बैनर्जी मोस्ट लाइकली एग्री एज पर द पैसेज, एज पर द पैसेज मिस बैनर्जी कौन सी इन तीनों 3 स्टेटमेंट दी, इनमें से किससे एग्री करेंगी एज पर द पैसेज, ठीक है। Next question, which of the following has been cited as the reason that justifies the actions of the Telangana governor not being allowed to address the budget session? तो उसका रीजन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो जस्टिफाई करती है, एक ये हमें ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स एज पर द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज, तो हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सी गलत है, ठीक है। फिर हमें, अच्छा ये दो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं कि यहाँ पे चूज द बेस्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द वर्ड्स गिवन इन कॉलम 1 गिवन बिलो टेकन फ्रॉम द पैसेज। अच्छा 3 sentences लिए हैं पैसेज में से, सॉरी 3 वर्ड लिए हैं पैसेज में से, हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सा वर्ड मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम, जो हम बचपन में करते थे यार, सिंपल वो करना है हमें एक, ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी मार्क्ड एज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, तो सेंट्रल थीम भी हमें ढूंढनी है, ठीक है। चलो, थैंक यू सागर। चलो अब नाउ आई एम गिविंग यू, अब इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा आपकी, क्योंकि मुझे पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई होप एंड आई एम श्योर आप सब कर रहे होगे, तो दिस आई वांट यू टू डू ऑन योर ओन, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू 4 minutes टू रीड द पैसेज। जब आप एक बार ये पहला स्लाइड पढ़ लो तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता देना, आई विल शो यू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो चलो गाइस क्विकली शुरू करते हैं और फटाफट से, ठीक है, पैसेज पढ़ो, जो आपने क्वेश्चंस देखे हैं उनके बेसिस पे अपना पैसेज पढ़ो, उसको कॉम्प्रिहेंड करो एंड देन लेट्स सी व्हाट कुड बी द राइट आंसर्स, ठीक है। तो लेट्स बिगिन गाइस, शुरू करते हैं फटाफट से, मुझे पढ़ के 4 मिनट आपके पास, तो बाय 7:18 आपको खत्म करना है इसको, ठीक है। लेट्स गो फॉर इट।
Yes, guys, have you read the first slide? Should I show you the second? Yes? Chalo. Let's look at the next slide. Guys, it's almost 6 minutes. मैंने आपको 4 मिनट दिया था, तो थोड़ा सा अपनी रीडिंग स्पीड को, कॉम्प्रिहेंशन पावर, एबिलिटी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें. लेट मी नो इफ यू डन रीडिंग इट, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ठीक है? तो गिव मी confirmation in the chat box that we have read it, and then I'll show you the questions and we'll solve them together. This guy is done. Has everyone read the passage? Yes. Chalo. Done. Let's now try to solve the question. पहले तो एक तो ये था ना सी आई टू आई के टू कॉन्ट्रास्टिंग इश्यूज. पहले तो एक फर्स्ट स्टेटमेंट पे क्वेश्चन था. टू कॉन्ट्रास्टिंग इश्यूज कंसर्निंग द लेजिस्लेचर इन टू स्टेट्स appear to sum up the potential for political controversy when elected governments and governors do not see eye to eye. Seeing eye to eye basically means when people do not like each other, when they are not when they are not on talking terms, या जो एक दूसरे को जब पसंद नहीं करते, that is what we call when people do not see eye to eye. राइट. पहली स्टेटमेंट भी हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया कि दो घटनाएं बताई. एक तो उसने बताई वेस्ट बंगाल की और एक बताई आई थिंक तेलंगाना की, कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है. एक जगह पे गवर्नर की स्पीच से पे इतना बवाल हो गया कि उसको बस फर्स्ट और लास्ट लाइन बोल के सेशन को शुरू करवा दिया गया, राइट, इन बंगाल. और जबकि दूसरी तरफ तेलंगाना में गवर्नर की स्पीच को कैंसिल ही कर दिया, बोलने ही नहीं दिया, ये कह के एक टेक्निकल एक पॉइंट देकर कि पिछला सेशन जो था वो ख़त्म नहीं हुआ था फॉर्मली, तो ये जो सेशन है ये पिछले सेशन की ही कॉन्टिन्यूएशन है, तो गवर्नर एड्रेस की ज़रूरत नहीं है इसमें. ये बोल के उन्होंने मना कर दिया, गवर्नर के एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं है. जबकि गवर्नर
कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि भाई ये एक फॉर्मेलिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑल तो ये फॉर्मेलिटी है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को ही करना चाहिए ओपन लॉजिकली, बट है जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है, अब उसको सिविलिटी के बेसिस पे फॉलो तो करना चाहिए जहां पर भी होता है। तो ये उसने कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दिया है, राइट। तो अब क्वेश्चन करते हैं गाइस, 3 sentences हैव बीन गिवन बिलो, you have to read the same and choose which of the following would correctly take the idiom see eye to eye as used in the passage. The house on the CP square certainly see eye to eye. Should we take a look inside? Second sentence, they said they were ending the contract because they didn't see eye to eye with their clients. Okay. After she found out about his latest relapse with drugs, she decided it was best to see eye to eye. Yes, guys, which of these sentences, uses the phrase see eye to eye in the right manner? Only one, only two, only three, both one and two, both two and three. Very good, Shikhar. Very good meditation. Meditation, long time no see. Very good, Swarima. Very good, Nandini. Very good, Riya. Very good, Santanu. Absolutely correct. See eye to eye means do not like each other, or they are not on talking terms. तो घर के साथ तो ये हो ही नहीं सकता, हाउस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर शी फाउंड आउट अबाउट हिज लेटेस्ट रिलैप्स विद ड्रग्स, शी डिसाइडेड इट वाज बेस्ट टू सी आई टू आई, मतलब इट वाज बेस्ट टू सी आई टू आई, मतलब उसके साथ, मतलब आंखों से आंखें मिला के बात करना नहीं, वो तो क्या कह रहे हैं, आफ्टर शी फाउंड आउट कि उसने दोबारा से ड्रग शुरू कर दिया, ठीक है, शी डिसाइडेड इट वाज बेस्ट टू सी आई टू आई, नो, only this was correct. They said they were ending the contract because they didn't see eye to eye with their clients. So only option 2 was correct. Very well done, guys. Randomly होती हैं मेडिटेशन, कभी कभी हो जाती है, लाइक टुडे, अभी एक 26 को भी है, सो आई थिंक टुडे इज 23rd, 24th, 25th, ट्यूसडे को, राइट, देयर इज अनदर क्लास 6 PM एंड आई विल ब्रिंग अनदर मॉक टेस्ट फॉर यू ऑन 26, सो बी रेडी। और उस दिन आप अपना स्कोर चेक करना कि यार चलो अब हम प्रिपेयर करके देखते कि एग्जाम में कैसा हम अटेम्प्ट करके आएंगे, राइट, राइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्लेन्स द ओपनिंग लाइन ऑफ द पैसेज, ठीक है, ओपनिंग लाइन हमने पढ़ी थी, दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। The two contrasting issues concerning the legislature in two states appear to sum up the potential for political controversy when elected governments and governors do not see eye to eye. So, which of the statements explains the opening line? The governors in the mentioned states have forgotten their line of duty and need to be made aware of the same. The elected governments are trying to impose their superiority in the states as they do not wish to function in alignment with the center. Third, two states are facing the same issue of visible tussle between the governor and the state government, however, for completely opposite issues. Okay? Both B and C or other than the given options. Yes, guys. Very good, Nandini. Very good, Santanu. Nandini, was it anywhere clearly mentioned that elected governments are trying to impose their superiority in the states as they do not wish to function in alignment with the center? Was it explicitly mentioned in the passage anywhere? Nandini? Very good, Krishna. Very good, Shikhar. Very good, Swarima. Very good, Harshita. The correct answer is option number C. See, it is nowhere explicitly mentioned that this is happening because of the clash between disagreement between center and the state. कहीं पे ये बात लिखी हुई थी गाइस? It is due to the state government showing their superiority and they do not wish to function in the alignment with the center. Superiority मैं मान सकता था, लेकिन ये तो कहीं mention नहीं था, they do not wish to function in alignment with the center. Am I right? So प्लीज मेक श्योर कि जो रियलिटी है क्या है वो छोड़ दो। सर सच्चाई तो यही है ना कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, और वहाँ पे डीएमके है, तो वहाँ इस वजह से हो रहा है, राइट। रियलिटी हमें पता है कि सेंटर में बीजेपी है, वहाँ पे अलग है, लेकिन अगर पैसेज में मेंशन नहीं है, वी कैन नॉट अज्यूम इज, वो मैं अगर मेंशन नहीं है ना नंदिनी, ये जरूरी नहीं है कि यार गवर्नर सेंटर का है, और हमेशा ये सिचुएशन तभी होगी जब ये मतलब सेंटर और स्टेट में दोनों में अलग अलग गवर्नमेंट होंगी। अगर ऐसा होता बाय चांस कि स्टेट और सेंटर में दोनों में सेम गवर्नमेंट होती, तो ये तो जनरलाइजेशन वाली बात होगी ना।
एग्जैक्टली। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मिसेस बैनर्जी मोस्ट लाइकली एग्री एज पर द पैसेज। ठीक है, तो आपको तीन स्टेटमेंट दिया, हमें बताना है कि इन तीनों में से किससे मिस बैनर्जी एग्री करती। फर्स्ट, द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस मस्ट बी अबाइडेड बाय एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इफ नॉट एनीथिंग एल्स। Second, things should be continued as they are since they are in fashion, as breaking of rules by the government is not desirable. ठीक है, so things should be continued as they are since they are in fashion, as breaking of rules by the government is not desirable. Third, Telangana and West Bengal are two entirely different geographies, and what happens in one won't dictate what happens in the other. Yes guys, so your options are only two, only three, both 2 and 3, both 1, या both 1 and 3. Rahul, if you work hard enough, you can. The only thing you have to remember, Rahul, if you deserve, you can desire. ठीक है, मैं हमेशा यही बताता हूँ, मैं हमेशा एस्पिरेंट्स को, कि अगर आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो ये जॉब, ठीक है, तो डिज़ायर करो, मेहनत करो। ठीक है, और जितने आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा आपकी पोटेंशियल एप्लीकेबिलिटी अप्रूव होगी। राइट, लेकिन पहले ये चीज़ समझो कि क्या हमने उस लेवल की प्रिपरेशन की है कि वी डिजर्व टू बी ए नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। राइट, अभी देखो, अगर ये 20 दिन में अगर ये पेपर क्लियर होते, ऑनेस्टली देखो, आई विल बी वेरी ब्लंट यार। ठीक है राहुल, फेज़ 1 हो जाएगा, फेज़ 2 का कैसे करोगे? वो भी चलो मान लो भगवान की दया से हो गया, आपने बहुत पूजा प्रार्थना की, बहुत मेहनत की, सबकी दुआ थी आपके साथ, मान लो फेज़ 2 भी हो गया, इंटरव्यू कैसे करोगे फिर? और अगर आपको लग रहा है कि 20 दिन में नबार्ड जैसे एग्जाम अगर क्लियर होते हो, तो डू यू थिंक इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होता? बस इसी का आंसर कर देना आप मुझे, रेस्ट आई थिंक यूल गेट द आंसर। 20 दिन में भाई वही है, सबके लिए 24 घंटे ही हैं, आप उतना पढ़ सकते हो जितना पढ़ सकते, जितना टाइम है आपके पास, जितना आपको बॉडी अलाउ करेगी। बट वुड यू बी एबल टू कवर ईच एंड एवरीथिंग? मे बी नॉट। फेज़ 1 हो जाएगा आपका, फेज़ 2 के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है राहुल? हाँ, अगर आपका ये है कि आपने थोड़ा सा पहले से प्रेपरेशन कर रखा है, अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट राहुल, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, अगर आपने मान लो कोई और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, अब आपने नबार्ड की तैयारी करनी है। अब मान लो आप, फॉर एग्जाम्पल, आप आईबीबीएस की तैयारी करते हो, राइट, यूजुअली बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हो। ठीक है, तो उसमें मोस्टली जो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये वाला पार्ट उसमें भी आता है, तो उस वो पार्ट अब यहाँ पे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। राइट, लेकिन यहाँ पे जो अलग से टॉपिक आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ये आपको कवर करना पड़ेगा अगले 20 दिन में। इफ यू थिंक यू कैन डू दैट राहुल, और थोड़ी सी अपनी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की अगर आप हैबिट बना सकते हो, तो आई थिंक यू कैन डू इट, व्हाई नॉट? ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। बोथ 2 and 3, नो गाइस, एब्सोल्युटली रॉन्ग, द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्यों? अभी देखना, द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस मस्ट बी अबाइडेड बाय एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इफ नॉट नथिंग एल्स। ये क्लियरली गिवन था पैसेज में, देखो यहाँ पे, द गवर्नर्स एड्रेस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी albeit a significant one, as it is essentially a statement of policy of the regime of the day. That the formal occasion is mired in political wrangling is a sign of institutional decay and unwarranted politicization of constitutional norms. That Mrs. Banerjee, ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है आंसर आपका, that Mrs. Banerjee saw the incidents in the assembly which almost resulted in the abandonment of the governor's address as an attempt to create a constitutional crisis, shows that leaders still attach constitutional significance to the tradition. ये clearly mention था आपको। ठीक है, इफ यू नो द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, देन ARD ASI, अगर आप ये 20 दिन में कवर कर पाओगे राहुल, तो आप कर सकते हो ये एग्जाम, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, हाँ, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हो तो इट वुड बी रियली डिफिकल्ट। देखो, आई डोंट वांट, देखो मैं अभी आपको कोर्स भी पिच करूंगा, अभी ये खत्म होने के बाद मैं बोलूंगा आपको कि हम ऐसा कोर्स लॉन्च किया है हमने, हम 3 हफ्ते में आपको एग्जाम रेडी बना रहे हैं। राइट, अब वो है, और वो क्रैश कोर्स है, लाइव बैचेस, लाइव क्लासेस हैं उसके अंदर, डेली बेसिस पे 4-4 6-6 घंटे की। राइट, अब उससे आप ARD ESI सारा कवर कर सकते हो, लेकिन उसमें इंटेंट भी होना जरूरी है। राइट, चलो, तो यहाँ पे क्या था गाइस, ये देख लो, द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस मस्ट बी अवॉइडेड बाय एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इफ नथिंग एल्स, ये क्लियरली मेंशन है। थिंग्स शुड बी कंटिन्यूड एज दे आर सिंस दे आर इन फैशन, ये मिसेस बैनर्जी नहीं मानती। ठीक है, तो ये इससे एग्री नहीं करती वो शायद। ब्रेकिंग ऑफ रूल्स बाय द गवर्नमेंट इज नॉट डिजायरेबल। ठीक है,
अब ये अगर मान भी लेते कि चलो ठीक है ये हो सकता था कि, लेकिन 1 और 2 का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, देखो 2 and 3, 1 and 3, 1 and 2 का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ये तो मिसेस बनर्जी ने बोला ही नहीं है यहाँ पर, तो करेक्ट ऑप्शन हियर वाज ओनली 1। ठीक है, चलो guys, next question, which of the following has been cited as the reason that justifies the actions of the Telangana governor not being allowed to address the budget session? ठीक है, कि इनमें से कौन सा रीजन है जब जो जस्टिफाई उन्होंने बोला, जस्टिफाई करने के लिए कि तेलंगाना गवर्नर को एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, इस इनमें से क्या रीजन था उसमें? That the practice of the addressing before the session is not valid, as the head of the elected government should be the one who should open the discussion. ये जस्टिफिकेशन थी उनकी। द गवर्नर वाइल एड्रेसिंग द लास्ट टाइम मेड सम डेरोगेटरी रिमार्क्स ओवर द स्टेट ऑफ द अफेयर्स मेकिंग द एपिसोड क्वेश्चनेबल, ये जस्टिफिकेशन थी, इसलिए उन्होंने गवर्नर को नहीं अब की बार एड्रेस करने दिया। थर्ड, द वेस्ट बंगाल गवर्नर वॉज फाउंड इंडिकेटिंग इन हिज एड्रेस दैट द गवर्नर्स हैव नाउ स्टॉप्ड इंटरफेयरिंग इन गवर्नमेंट अफेयर्स, ये तो कहीं गिवन ही नहीं है। द स्टेट गवर्नमेंट फाउंड दैट द गवर्नर व्हाइल एड्रेसिंग वेंट ऑरी लीडिंग टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू अथॉरिटीज, और नन ऑफ द अबव। यस गाइस, क्लियरली मेंशन था बाय द वे इसका आंसर, मैं आपको दिखा भी देता हूं, बट अगर आपने आंसर देखा है इनमें से क्या लग रहा है? वेरी गुड रेयाबा, देखो क्लियरली यहाँ पे मेंशन था, देयर मे इवन बी, लास्ट लाइन देखना गाइस, ये देखो यहाँ से, देयर मे इवन बी अ केस फॉर डूइंग अवे विद द फॉर्मेलिटी और इवन आर्ग्यूइंग दैट पॉलिसी स्टेटमेंट इज बेटर रेड आउट बाय द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, कि हो सकता है कि ये बात क्वेश्चन की जा सकती है, आर्ग्यू किया जा सकता है कि भाई ये फॉर्मेलिटी क्यों रखी गई है, गवर्नर आएगा, वो खोले, वो स्टेटमेंट देगा, फिर सेशन शुरू होगा, चीफ मिनिस्टर जो है इलेक्टेड है उसी को शुरू करना चाहिए ना यार, वही एड्रेस दे दे, क्योंकि बात उन्हीं की सरकार की होनी है सारी, और उसी से फिर सेशन शुरू हो जाए, होना ये चाहिए प्रैक्टिकली। लेकिन हाउ एवर एज लॉन्ग एज द, अच्छा ये तो फर्स्ट पेज की लास्ट लाइन में था, सॉरी यहाँ पे था, द सेरेमोनियल एड्रेस इज यूजुअली डिलीवर्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर ड्यूरिंग दिस आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट पोजीशन वाज टेक्निकल एंड इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू कमेंस द बजट सेशन विदाउट हर एड्रेस। द एपिसोड अपीयर्स टू अराइज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट एंड राज भवन एज द रूलिंग TRS seems aggrieved that the governor deviated from the text of her address last year and on some other issues too. The episode appears to arise from the point of conflict. किस बात से शुरू हुआ है conflict? कि as the ruling party TRS seems aggrieved, उनको गुस्सा किस बात पे आया है? That the governor deviated from the text of her address last year, कि पिछली बार जो उनको बोलना था उससे deviate कर गई वो, and on some other issues as well. तो ये जस्टिफिकेशन दिया उन्होंने कि यहां से शुरू हुआ था ये सारा जो मामला था। तो यस गाइस, बी बनता है या डी बनता है? द गवर्नर व्हाइल एड्रेसिंग द लास्ट टाइम मेड सम डेरोगेटरी रिमार्क्स ओवर द स्टेट ऑफ द अफेयर्स मेकिंग द एपिसोड क्वेश्चनेबल, या द स्टेट गवर्नमेंट फाउंड दैट द गवर्नर व्हाइल एड्रेसिंग वेंट ऑरी लीडिंग टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू अथॉरिटीज। देखो डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं बोले, उसने बोला डिविएट हुआ था, मतलब जो बोलना था वो नहीं बोला, कुछ और बोल गए वो। सो द राइट आंसर हेयर वाज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेरी वेल डन गाइस, वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड रयाबा, संतनु, हर्षिता, नीरज, शिखर, वेरी वेल डन। हाँ वो वही हो सकता है नंदिनी, कंफ्यूजन हो सकता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स एज पर द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज? तीन स्टेटमेंट्स हैं, we'll read the statements and we'll see which of them could be false. The Telangana government had discontinued the previous session without dissolving the same. The Telangana government had discontinued the previous session without dissolving the same. हाँ ये दिया हुआ था, ठीक है। Mrs. Banerjee was finally able to cajole the governor to at least read the first and the last lines to begin the session. ये भी given था। Both the CMs mentioned above have been known to have animosity towards the center and hence their state governors behaved the like. Yes guys, what is the right answer? Yes guys, can you find the right answer? देखो ये भी क्लियरली गिवन था, तेलंगाना, अरे ये कैसे शिखर, ये कहाँ दिया हुआ है कि बोथ द सीएम्स मेंशनड, इन दोनों ने मेंशन किया कि दुश्मनी क्यों हुई, क्योंकि सेंटर और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट थी और इसलिए गवर्नर ऐसा कर रहे थे, ये कहाँ पे मेंशन था?
नो, दिस वाज क्लियरली मेंशन्ड कि गवर्नमेंट ने पिछली बार जो सेशन खत्म हुआ था वो खत्म नहीं किया था बेसिकली। तो क्या बोल दिया, विदाउट डिसॉल्विंग उसको खत्म कर दिया था। तो अब की बार क्या सफाई दी थी उन्होंने कि गवर्नर की एड्रेस की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछला सेशन खत्म नहीं हुआ था, तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है, ये गिवन था। सेकंड, मिसेस बनर्जी वाज एबल टू कजोल द गवर्नर, मतलब उनको मना पाई वो टू रीड एटलीस्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन टू बिगिन द सेशन, ये भी क्लियरली गिवन था। लेकिन ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है एक्सप्लिसिटली। सो द ओनली स्टेटमेंट एज विच इज फॉल्स एज पर द कंटेंट्स इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दैट इज ओनली स्टेटमेंट 3 is false as per the contents of the passage. Riyaba, हाँ, very good, very good. Why D, Rahul Shantanu? Why D? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लगे ना गाइस जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं बन रहा, तो ड्रॉप कर दो, जरूरी नहीं है मतलब अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, यहाँ पे कर रहे हो, नॉट एन इशू, यहाँ तो सारे करो, लेकिन एग्जाम में प्लीज मेक श्योर कि आप यो अगर लग रहा है कि तुक्का मार रहे हो तो उसको प्रॉब्ली ना करो क्योंकि वो गलत हो जाएगा यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द बेस्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम 1 बिलो टेकन फ्रॉम द पैसेज। रैंगलिंग, इंकम्बेंट एंड अप्रोर। राइट, ये 3 वर्ड्स ले यार, हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। द डैश प्रेसिडेंट फेसेस प्रॉब्लम्स विच बिगैन मेनी ईयर्स बिफोर ही टुक ऑफिस। द डैश प्रेसिडेंट फेसेस प्रॉब्लम्स विच बिगैन मेनी ईयर्स बिफोर ही टुक ऑफिस। ठीक है, अब इसमें क्या आना चाहिए, द रैंगलिंग प्रेसिडेंट, द इंकम्बेंट प्रेसिडेंट या द अप्रोर प्रेसिडेंट। सेकंड, द मूवी कश्मीर फाइल्स हैज कॉज्ड एंड डैश ऑन ट्विटर। रैंगलिंग, इंकम्बेंट या अप्रोर। एंड थर्ड, वी फाइंड सम पीपल इन आवर हाउस हु एंगेज इन dash in order to simply feel superior. Wrangling, incumbent या uproar. So I think yes guys, चलो I'll leave this question to you. Let me see कि आप सही आंसर ढूंढ पाओगे या नहीं ढूंढ पाओगे। देखो, इंकम्बेंट प्रेसिडेंट, इंकम्बेंट मतलब जो इस टाइम पे चल रहा है सरकार, वही होता है। अप्रोर प्रेसिडेंट कुछ नहीं होता, रैंगलिंग प्रेसिडेंट कुछ नहीं होता। ठीक है, इट कॉज एन अप्रोर ऑन ट्विटर, तो आई थिंक ये सही था यहाँ पे। एंड रैंगलिंग मतलब धोखाधड़ी करना। सो ए with 3, yes, B with 1, yes, and C with 2. So correct option was option C. Very well done guys. Chalo, keep up the good work. And last question, which of the following options can be marked as the central theme of the passage? The differences between the leaders should not lead to politicizing of constitutional norms. Okay, the constitution and its norms at risk of disrepute while the leaders decide not to give in. The constitution and its norms at risk of disrepute while the leaders decide not to give in. उन्होंने हार नहीं मानते हो. The rift between the center and the states getting wider. The governors and their realm of power should be rethought about. And next, the elected state governments and the need to cooperate with the administration. What do you think is can be the central theme of the passage? Very well done guys. See the clear message that was conveyed कि यार ये छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े असेंबली में सेशंस में नहीं होने चाहिए. They should not be politicized. So the differences between the leaders should not lead to politicizing of constitutional norms. Very well done guys. तो क्विकली अब मुझे फटाफट से बता दो गाइज, आप कितना स्कोर रहा आपका फाइनली. हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू गेट राइट एंड हाउ मेनी डिड यू गेट रॉन्ग. और फाइनल स्कोर बताना बस मुझे. फाइनल स्कोर अपना नेगेटिव जो रॉन्ग आंसर है वो डिडक्ट कर लो. ठीक है, और जो फाइनल स्कोर बताओ आउट ऑफ 30 आपके. आज अगर आपका एग्जाम होता तो आप कितने स्कोर करके आते हैं. बी ऑनेस्ट अबाउट इट. नोबडी इज जजिंग नो वन. कोई किसी को नहीं जानता यहाँ पे. आप सब सिर्फ मुझे जानते हो और मैं आप सबको जानता हूँ. ठीक है, तो डू टेल मी योर स्कोर. लेट मी नो कि हम कहाँ पे चल रहे हैं. आर वी ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. And before we end, I also have 5 homework questions for you. So these are the homework questions. Number 1, number 2. Sentence improvement based questions the. Number 3, number 4 and number 5. You can practice these questions. These are good questions. You can practice these questions from the PDF, the link for which has been given in the description of the video. And guys, before we end the session, I would like to inform you about the live quick revision batch. This is a live quick revision batch where you will be conducting
in the next 3 weeks. It has started on 18th September, by the way, guys. So we have already begun. You'll get the sessions, recorded sessions there, and also you will be able to attend the live sessions. So in next 3 weeks, we'll be preparing you for your phase 1 exam, which includes 70 hours of live classes. That means if we are taking 6, 12, 18, so let's say 18 days, in next 18 days, right, 6 days a week, next 18 or 7 days a week, 21 days, we'll be conducting 70 classes. That means almost 3.5 hours of classes every day, right? Now if you can do that, now you will be provided each and everything in this course: quants, reasoning, English, decision making, then computer ability, then your ARD, ESI, then your general awareness, then there will be live mock tests that will be given to you, and this include everything that you need to prepare for a phase 1 exam. जैसे राहुल अभी पूछ रहे थे, सर लास्ट 20 दिनों में क्या हो सकता है, दिस इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू, दैट कैन टेक यू, क्योंकि इसमें गाइस सबसे पहला आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे आपको जो आप डाउनलोड कर सकते हो, उनको रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। इसमें लाइव क्लासेस होंगी, वो लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिलेंगे आपको, आप बाद में अपनी मर्जी से भी देख सकते हो और लाइव भी देख सकते हो आप। देन यू विल गेट द टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट। इसमें सेक्शनल टेस्ट होंगे हर चैप्टर के बाद, फिर फुल लेंथ टेस्ट होगा कलेक्टिवली सारे टॉपिक्स का, एंड देन देयर विल बी 3 मॉक टेस्ट्स। अगले 3 हफ्ते का ये स्केड्यूल है, एंड वी आर ऑफरिंग फ्लैट 80% ऑफ, बिकॉज आखिरी का टाइम है बिल्कुल गाइस, फ्लैट 80% ऑफ। You can use this code NABARD80 to enroll yourself if you want to in this course, and you can get benefited from it. जैसे अभी हम लाइव सेशन कर रहे थे, ऐसे ही लाइव क्लासेस होंगी यहाँ पर, और हम I'll be teaching you the basic concepts, core concepts of English, right? तो वो सब वहाँ पे लाइव क्लासेस में दिया जाएगा आपको. So if you want, you can join us on this course. कोई बात नहीं रहा, it's perfectly all right. हर्षिता, समवट अराउंड देखो 10-11 के पास चला जाता है रफ, क्योंकि आपको बताता हूँ बाकी सब देखो क्वांट्स, रीजनिंग, ये सब 20-20 मार्क्स के होते हैं. इंग्लिश इज फॉर 30 मार्क्स. तो 30 में से जो मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है, इट यूज टू बी इट वाज अराउंड 11.25 लास्ट ईयर, इट वाज अराउंड आई थिंक 9.75 द ईयर बिफोर दैट, और ऐसे ही कुछ रहता है. तो 11, 11:30, 12 तक चला जाता है. तो योर टारगेट इज मिनिमम 12 याद रखना गाइस, एंड मैक्सिमम दैट इज योर चॉइस. ठीक है हर्षिता, कोई बात नहीं, काउंट नहीं किया, नॉट एन इशू. शांतनु, कुड हैव डन बेटर मेडिटेशन, और हम अच्छा कर सकते थे. नंदिनी, वेरी वेल डन, कीप अप द गुड वर्क नंदिनी. ठीक है, एंड कीप ऑन वर्किंग रियली हार्ड. So guys, that was it for today. If you want the PDF of this session, you will find it in the Telegram channel, the link for which has been given in the description of the video. The link for this course, quick revision batch, has also been given in the description of the video, and the coupon code where you can get flat 80% discount is NABARD80, and the link is given in the description of the video. You do not need to wait another minute. Go join if you think that you need the last revision batch. Now this is a revision batch. A revision will be crisp, quick, and it will be very impactful, to the point, जो exam point of view से बहुत important है, right? So you can get that. So thank you so much for your patience, for your receptiveness, for your kindness, and for everything that we share together. And guys, I wish you all the success in your endeavors. And this is really from the bottom of my heart. I really feel you can do it, right? All of you have the potential. Just remember these words: first deserve, then desire, right? If you feel you deserve this, you will get it. Remember this. ठीक है, और उतनी ही मेहनत करनी है. अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कमी है डिजर्व करने में, put in the hard work. Pull up your socks, pull up your sleeves, dig in your heels, and just do it. No excuses whatsoever. ठीक है, this is your chance. Take it, grab it. Nobody is going to come and give it to you. You'll have to grab it. Okay. If you wish to contact us for anything, you can call us on this number, guys, during the office hours, 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. Absolutely, Shikhar. Descriptive English is a compulsory paper for all the streams, be it general stream, legal stream, finance stream, any stream that there is, right? So descriptive English paper is common for all, and that paper is the paper where you can really take a lead, right? Because in your respective sectional exams, everybody will be doing his or her best, right? But English is a paper where you can take a lead if you really stand out. Remember that, right?
चलो गाइज, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, प्लीज फील फ्री टू आस्क. एंड गाइज, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लीव अ कमेंट सेक्शन, डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट section of the video. Do share your inputs, your constructive feedbacks, and we will cherish them. We are open to them, and if they help us to improve us and they help you better in any way possible, we'll definitely look into them. So guys, having said that, I'll take your leave for today. I'll see you again on 26th, that is on Tuesday, same time 6 p.m. with another live mock test like this. Don't miss out. And guys, I want all of you, जो मैंने होमवर्क दिया है उसके आंसर, जो लाइव स्टूडेंट्स अभी बैठे हैं और जो बाद में रिकॉर्डेड भी इस वीडियो को देखेंगे, आई वांट यू टू डू योर होमवर्क, ठीक है, डिलीजेंटली. संडे है, कल है टाइम, डू योर होमवर्क, ठीक है, एंड राइट डाउन द आंसर्स इन द चैट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक किया हुआ है आपने, आप वापस आना इसके चैट बॉक्स में, मुझे अपने आंसर्स लिख के बताना कि उन 5 क्वेश्चन के आंसर्स ए बी सी डी ई में क्या होंगे, एंड विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, चलो गाइस, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू.